Yes. So the most awaited topic, the most important topic, the most powerful coding in the Salesforce, we are going to start with Apex triggers. Apex trigger is the way to customize every requirement of business. Whatever we cannot achieve with any other, whether it's a non-coding environment, whether it's a coding, whatever is not possible with any other thing is possible with the Apex trigger. So triggers are the most powerful sort of coding. The most powerful entity of an Apex is basically Apex triggers. So we have understood that there are so many different kinds of operation that cannot be achieved either with the declarative customization or rather with the programmatic customization, whatever. You have learned so many things. You in the future also you will be learning so many things also. But the things that are not possible with any other kind of customization, it is possible with Apex triggers. So Apex trigger is having the highest priority, and it's the most, I should say, ki most powerful tool in the hands of a developer. The Apex triggers are the most powerful tool, and so see, whenever we have a great power with us, we it come up with a great responsibility also. So if you are writing Apex trigger, we should not make this as a practice that what for every kind of thing, right? Start writing a trigger. No, if something is possible without trigger, you should go with that. If something is possible with the process builder workflows or with any other kind of like any other kind of customization entity, then you should go with that. Because if you create a trigger, then it's 100% sure that that thing is going to be get executed. But then for writing trigger for everything is not a best practice. So trigger should only and only be created whenever something is only possible with the trigger, and there is no other way that you could implement that kind of business logic. So for such kind of business logic only, we should write down the triggers. So even though before we start this, understand the kind of scenarios I will be showing you few of there are so many use cases I will be covering from here. But then in the real time, whenever whenever any business logic or any requirement come into your table, into your task, then you first of all should ask yourself whether is it necessary to write down the trigger, or can I achieve this? Can I achieve this functionality without writing a trigger? Because if it can be achievable without writing a trigger, then go with that. Okay, finally, if it is not possible and you only have certain complicated functionality needs to be get implemented, and you don't have any other option rather than trigger, only in that scenario, we should write down the triggers. So triggers are the most powerful tool, and triggers are the most powerful kind of Apex that we are going to, learn right now. So, see, I have written few of the theoretical points over here that triggers are the custom Apex code, and then whatever the complicated validations, whatever the complex business logic, if we have, and that which is not possible with any other kind of things, then we should achieve those functionalities by using triggers. I wanted every one of you to go with this theory at least once, so that you all will get a familiar, you all will get familiar to this kind, what exactly it means by triggers. Okay. So for the business logic, we have learned so many different types of tools, right? We have seen validation rules. We even have created a formula fields. Yesterday itself, I created a formula for scheduling, right? And then we have seen what does it means by the roll-up summaries and the workflows and the process builder. Sharing rules also, record sharing, we have automatic sharing. For the automatic sharing, we have written certain sharing rules. Assignment rules, we have written it to transfer the ownership automatically of the lead and the cases record, right? This we have written. Now see, these are few of the customizations, a few of the custom business requirement that we have achieved. Now you need to understand few of the operations are few of the rules are applied before inserting or before updating. Most of the rules are applied after inserting and after updating. Like if I take validation rule, if I take validation rule as an example,
If I take validation rule as an example, so can any one of you tell me what are the different ways we could make a field mandatory in Salesforce? What is my question? Let me repeat it once again. For example, if I have, let's go to the candidate object, and if I have any field, for example, let's current CTC. Let's consider this. This is not a mandatory field. This is not a required field, by the way, but I wanted this to be a required one. How many different ways in Salesforce a field could be make mandatory? Yes, this one is also an interview question. Yes, Sohail. At the time of field creation, by Hmm. using page layout, by using Apex trigger, by Can you using can you Salesforce. can you summarize, Sohail? Can you give me answer like this? Point number one, or maybe these are the different ways. This is point number one. This is point number two. See, There whenever are, you are answering, Sohail, every one of yes, you, listen this carefully. Whenever you are answering something, whenever you are answering, if you know there are five different ways, I always have told you that start your answer by giving the count. I always have told you this. Whenever you are answering something, if you know two to three ways for that, then make a count. Before answering, make a count into your mind and then start by summarizing. There are three ways, there are four different ways. The first one is this, the second one is this, third one is like this. Okay? Now please start your answer like this. there are 5 ways we can make the field required or mandatory. First way is at the time of field creation. Second way is by using validation rule. Third way is by using Apex trigger. And fourth is by using Visual Force page. And fifth is by using field level security. Okay. So there is a validation rule. There's a validation rule also that you could make the field as mandatory. Let me show you that first. Okay. So current CTC over here is not actually a required one. So I can do one thing is like I can create a new validation rule. I can create a new validation rule over here, and let's make current CTC as required field. Okay. Let's make current CTC as required field. Now here I can do one thing. I could make that field as a. I can fire this. I can fire this formula. First of all, let me insert the field current CTC. Current CTC is equals to null, or I can use a function over here is null or is blank. I can directly make a use of is blank. Okay, insert is blank. Then in this I can use दो तरह से बना सकता हूँ मैं validation rule यहाँ पे. So I'm inserting the field current CTC. Let me try with the syntax. No errors found. ठीक है. So if this field current CTC is blank, this function is going to check current CTC value. If it is blank, ठीक है. If it is blank, it's current CTC is currency. Currency internally is decimal. Currency internally is decimal, and blank is used for text. I have a little bit confusion over here कि is blank या फिर is null में से कोई एक लेना चाहिए. Let me try with is null. Is blank अगर नहीं हुआ तो I will be using this function is null. ठीक है, देखते हैं. तो what kind of error message you wanted to give? So I will be giving one of the message like please enter the value in current CTC field. Current CTC field. This is what I'm giving as a error message. तो इस blank जनरली जो है ना वो टेक्स्ट के लिए यूज होता है. और करेंसी फील्ड जो है हमारी करेंसी फील्ड का जो डेटा टाइप इंटरनली है वो डेसिमल है. डेसिमल के लिए इज नल यूज होता है. फिर भी यहाँ पे एरर नहीं आया इसलिए मैं एक बार प्रोसीड करके देख रहा हूँ. हाँ. सो वेयर डू यू वांट टू डिस्प्ले दिस एरर मैसेज? आई वांटेड दिस टू बी एट डिस्प्ले एट द फील्ड लेवल. कौन सी फील्ड? करंट सीटीसी फील्ड पे. करंट सीटीसी फील्ड पे ही मुझे एरर डिस्प्ले करना है. सो लेट मी ट्राई टू सेव दिस. अब ठीक है, चलो ट्राई करके देखते हैं. सो
कैंडिडेट ऑब्जेक्ट पे चलते हैं एंड I'm entering one of the candidate, kiran@gmail.com. Position she is applying for example, testing module lead. Contact number is this, location is this, Hyderabad. Current CTC for now I'm not entering. Let me try to enter this value. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, because I have given the length as 10, that's why I was actually. Year of experience is probably 2 year, notice period is immediate, and she is ready with with all this education. Let me now try to save this. See, right, for now I have kept this as a blank, and let's see whether the function is going to work properly or not. Yes, it's giving me this error. Expected CTC is giving me. Okay, once again let me try to save this. Yes, तो इस blank चल रहा है यहाँ पे, ठीक है. तो प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ द सीटीसी, करंट सीटीसी फील्ड, प्लीज एंटर द वैल्यू इन द करंट सीटीसी. तो फील्ड लेवल पे आपको ये एरर आ रहा है. तो भले ही आपको यहाँ पे एक रेड लाइन नजर नहीं आ रही है ना, देयर इज नो रेड लाइन ओवर हियर, ऐसा कोई लाइन नहीं है यहाँ पे रेड लाइन जैसे, बट स्टिल इट्स गिविंग यू दिस एरर है ना. यहाँ पे आपको रेड लाइन तो नहीं है, इट इज नॉट एट ऑल अ मैंडेटरी फील्ड, स्टिल इट्स गिविंग यू दिस एरर. तो एक तरीका तो ये है, वैलिडे आप विद द वैलिडेशन रूल यू कुड मेक इट. बाकी जो तरीके सोहेल ने बताया कि एट द टाइम ऑफ क्रिएशन देयर इज अ चेक बॉक्स, है ना, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द फील्ड देयर इज अ चेक बॉक्स रिक्वायर्ड. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट चेक बॉक्स? रिक्वायर्ड. So if you click that, the field becomes mandatory. The second was with the page layout customization. The third was by writing the apex trigger. The fourth was by using the visual force page also, and controllers. And in the controller we could make the field. And the fifth one is like this validation rule. So this is one of the way. This is one of the way that we could make a field mandatory. तो validation rules कब fire होता है? Validation rule, here what you wanted to check, you wanted to check whether there is any value, whether there is any value has been entered over here or not. If this field current CTC, please enter the value, does it fields have any value or not? So agar user, if user is trying to save something, if user is trying to save something, that means he's trying to inserting a new record, he's trying to insert a new record, or rather he's making some changes in the existing record. Let me show you that also. There's a record, Shoail Sheikh, Shoail Sheikh has a record. Let me try to make a modification. I'm deleting this, and I'm trying to see if even if I'm trying to make an editing in the existing record, that time also, before inserting and before updating, before बिफोर मतलब क्या? पहले. आप खुद एक लॉजिकली सोचिए, अगर मैं इसको आफ्टर वैलिडेशन, अगर आफ्टर इंसर्ट आफ्टर अपडेट फायर होता तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ वैलिडेशन. Before somebody could save a record, before somebody could either insert a new record, or before somebody could perform the editing in the existing record, before saving a record, before inserting, before updating a record, the validation rule will check whether you have entered the value in this field or not, right? And that is the reason, logically the validation rules are fired before either inserting or before updating. और थोड़ा लॉजिकली आप भी सोचिए कि अगर रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया या रिकॉर्ड अपडेट हो गया, आफ्टर इंसर्ट आफ्टर अपडेट अगर ये होता, तो उसके बाद कोई मीनिंग ही नहीं होता वैलिडेशन रूल का. वैलिडेशन रूल इज स्टॉपिंग यू हियर, वैलिडेशन रूल इज स्टॉपिंग यू दैट यू मस्ट एंटर समथिंग ओवर हियर. यहाँ पे आपको वैल्यू इंसर्ट करना ही पड़ेगा. इफ यू डोंट इंसर्ट एनीथिंग ओवर हियर, यू कैनॉट मेक एडिटिंग, यू कैनॉट सेव दिस रिकॉर्ड अनलेस एंड until you have supplied the value of current CTC. So validation rule is the only thing, is the only thing that works before insert and before update. Apart from validation rule, every other entity, it could be a formula field or the roll-up summary or the workflow, they all work after insert, after update. Like yesterday I created a formula. For what? We go to the position object, there I created a formula field with this name, position record can be deleted or not. I see these records have all been deleted. That's great. You see, position record, all of them have been deleted. Yesterday we created a class, a one batch class, and then we have scheduled it. Right? We scheduled it, not yesterday. I think on Saturday we have done this. So we scheduled that class. Now see, that class has been run. वो class run हुई है, उसने सारे positions record delete कर दिया.
जिसका भी वो चेक था। लेट मी गो टू द सेटअप एंड लेट मी सी वो क्लास कब रन हुई है। देखो हमने जो क्लास बनाई थी वो रन हुआ, उसने ये सब कर लिया। लेट्स सी विद द शेड्यूल्ड जॉब। ठीक है, लेट्स सी विद द शेड्यूल्ड जॉब, डिलीट क्लोज पोजीशन रिकॉर्ड, दिस क्लास हैज बीन एग्जीक्यूटेड, दिस क्लास हैज बीन, ये आपको बैच में भी दिख जाएगा। दिस क्लास हैज बीन एग्जीक्यूटेड एंड इवन बिकॉज उसमें बैच प्रोग्राम भी किया था, तो ये मुझे बैच में भी दिखता है। अपेक्स जॉब में अगर मैं जाता हूँ, बैच अपेक्स कंप्लीट हुआ है, ये कंप्लीटेड, राइट। ये उस दिन क्यूड हुआ था, सी इट वाज क्यूड बट नाउ इट्स स्टेटस इज कंप्लीटेड, दैट मीन दैट पर्टिकुलर बैच अपेक्स वाज एग्जीक्यूटेड। और ये कब एग्जीक्यूट हुआ है, दैट वाज कंप्लीटेड ऑन 6th, यूएस के हिसाब से 6th। ठीक है, डिलीट क्लोज्ड पोजीशन बैचेस, सी दैट क्लास वाज एग्जीक्यूटेड at this time, at this time 2 a.m. exactly, this is the what we have given as a time, 2 a.m. on this particular date, because we wanted this to be get executed on every Saturday or Sunday, I think I have given, मैंने वो schedule किया था, I think on every Sunday, I think मैंने schedule किया था, तो Sunday it was executed, Sunday it was executed at 2 a.m. And then what this class has done, it has deleted, it has deleted all of that position records whose milestone date has been over। देखो प्रॉपरली काम किया क्लास ने। एनीवेज, तो the formula field once you insert everything, once you insert the date, milestone date, once you insert this milestone, once you after insert or after updating, for example if I make any changes over here, for example let me make it as like February of 22, if I make this like 15th of February, if I save it, ठीक है, if I save it, now see after inserting this position the formula field works. So formula always work after, either after inserting a new record or just now what I have did, I have updated an existing record. तो after insert and after update, ये मैंने आपको लाइव दिखाया अभी। तो नेक्स्ट संडे, आई मीन कमिंग संडे को देखो, कमिंग संडे इज व्हाट, 12th है ना, नहीं 13th, तो 13th को ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा जावा। सो मंडे को, नेक्स्ट मंडे को अगर हम बाय द वे आके देखते हैं तो वी विल नॉट फाइंड दिस रिकॉर्ड, क्योंकि मैंने इसके माइलस्टोन डेट को चेंज कर दिया। सो आफ्टर इंसर्ट एंड आफ्टर अपडेट योर फॉर्मूला फील्ड, योर रोल अप समरी आल्सो आफ्टर इंसर्ट आफ्टर अपडेट एवरीथिंग, वर्क फ्लोस आफ्टर इंसर्ट आफ्टर अपडेट, प्रोसेस बिल्डर, शेयरिंग रूल्स एंड एवरीथिंग। ओनली द वैलिडेशन रूल, only the validation rule is something that work before inserting and before update, क्योंकि अगर रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता है या फिर अपडेट हो जाता है तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ चेकिंग द रूल, है ना। So these all are the things that we have studied, these all are the things that we have studied. Some of them, most of them are after insert, after update. Validation rule is the only thing that works as a before insert and update. Now let's take this as an example. अभी ध्यान से सुनो कि why we are taking this as a discussion, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, why at all we are discussing कि validation rule जो है वो before insert update काम करता है, formula after insert update काम करता है, roll up summary after insert after update, even after delete and after undelete also, workflow rules आपके after insert after update काम करते हैं। Why at all we are discussing this? Because I wanted you to understand one fact. For example, let's consider that we have a certain kind of business requirement, ठीक है, we have a certain kind of business requirement where I wanted to implement both kind of functionalities. For certain requirement, for certain business requirement, I actually require the functionalities, I require some kind of validations to be get checked even before insert, before update, even after insert, after update. Then how can I do this? मतलब आप सुनो, फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा कहने का ये मतलब है कि ऐसा अज्यूम करिए कि हमारे पास कुछ इस तरह का रिक्वायरमेंट आया है जिसमें हमें बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, साथ ही साथ आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट पर भी कोई वैलिडेशन रूल लगाना है। समझ रहे हैं? फिर से सुनिए, किसी एक कुछ ऐसा सिनेरियो अपने दिमाग में अज्यूम करिए कि किसी एक बिजनेस रिक्वायरमेंट आई है और उस बिजनेस रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे जो भी चेक करना है, whatever the validation, whatever the formula, whatever I need to be get checked, जो भी उसकी प्री रिक्विजिट है, जो भी उसका प्री रिक्विजिट है, that needs to be done, that needs to be done even before inserting, before updating, and after inserting, after updating also.
नाउ व्हाट विल यू सजेस्ट? अब सवाल ये उठता है कि ऐसा ऐसी रिक्वायरमेंट जिसमें द वैलिडेशंस मस्ट बी अप्लाइड बिफोर इंसर्ट बिफोर अपडेट, and it also should be get applied after inserting and after updating. तो अब अगर मैं बात करूं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल इफ आई डोंट हैव एनीथिंग कॉल्ड एज ट्रिगर, तो फिर मैं क्या करूंगा? फॉर द थिंग्स व्हाट वी आई वांटेड टू डू बिफोर इंसर्टिंग एंड अपडेटिंग, I will go with validation rules, and the things what I wanted to be get checked after inserting and after update, I will design formula field. That means my whole business logic will be get splitted into two things. For certain kind of business requirement, I need to write down validation rule. What is that certain? All of the things that needs to be get evaluated before inserting and updating, and the things which I wanted to be get evaluated after inserting or updating, I need to write down the formula. That means you need to design the whole business logic by using two different entities of Salesforce: validation rules and then formula fields. तो यहाँ ये दिक्कत आती है बॉस, यहाँ ये दिक्कत आती है। अगर बाय द वे कभी इंटरव्यू में तुमसे ऐसा पूछा, कैन वी रिप्लेस ट्रिगर्स विथ एनीथिंग, तो यू कैन से यस वी कैन डू दैट, यस वी कैन डू दैट। we can replace triggers by two things. एक्चुअली कैसा है, दो चीजों को मिला के बनता है ट्रिगर, फॉर्मूला एंड वैलिडेशन। ये बात को समझो, बिकॉज वैलिडेशंस आर अप्लाइड बिफोर इंसर्ट बिफोर अपडेट, formulas are after insert after update. So yes, you can replace them, yes you can replace them, but that is going to complicate your business logic, बिकॉज एक अकेला ट्रिगर जो कुछ कर सकता है ना, उसके लिए हो सकता है मुझे वैलिडेशन लिखना पड़े, फॉर्मूला लिखना पड़े, या मुझे रोल अप समरी लिखना पड़े, या मुझे प्रोसेस बिल्डर भी लिखना पड़े, या फिर मुझे प्रोसेस बिल्डर भी लिखना पड़े, ऐसा हो सकता है। तो एक अकेला ट्रिगर जो कर सकता है, उसका रिप्लेसमेंट अगर मैं ढूंढने जाता हूँ, तो कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है जो मुझे ये चीज करवा के दे सकती है। फ्लोज है, थोड़ा सा पावरफुल है, मतलब फ्लोज पे अभी मेरी खुद की अपनी स्टडी उतनी अच्छे से नहीं हुई है, बट देन समवन वाज टेलिंग मी वन थिंग, वन सेकंड गाइस, वन सेकंड। Yes. So if the question is, can we replace the triggers? Answer is yes, we can do that. But that is not going to simplify your logic. Rather, it's going to make, rather it's going to make it more complicated. Trigger itself is that much powerful that he can do every operation, whether it needs to be get performed before or it needs to be get performed after. First of all, let's understand only about before and after. ये बाकी DML पे अपन बाद में आते हैं, insert, update, delete पे बाद में आते हैं। Operations that needs to be done before performing something, before performing something, before performing insert, before performing update, before performing delete, whatever, before performing, before, whatever the operation that you wanted to perform before, that can be done with the triggers. Even though the operation that we wanted to perform after, let's say after क्या, after insert, after update, after delete, every operation after undelete, ठीक है, डिलीट किया वापस अनडिलीट कर दिया, रीस्टोर कर दिया, उसको वापस ला लिया। तो एवरी सच ऑपरेशन दैट वी वांटेड टू परफॉर्म बिफोर और आफ्टर, ठीक है, that all can be done with the triggers. तो ट्रिगर इज सिंगल इन सिंगल एंटिटी है, लेकिन इतना पावरफुल है दैट इट कैन परफॉर्म ऑल अदर ऑपरेशंस। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता था कि देखिए, इफ वी वांटेड टू परफॉर्म बिफोर इंसर्ट बिफोर अपडेट आफ्टर इंसर्ट आफ्टर अपडेट, देन बिफोर वाला पार्ट वैलिडेशन से होता है, आफ्टर वाला पार्ट जो है आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। लेकिन फॉर्मूला कैन ओनली बी वर्क फॉर इंसर्ट एंड अपडेट, ये दो डीएमएल के लिए। इफ योर ऑपरेशन इज डिलीट एंड अनडिलीट, then even though formula will cannot work, that we need to write down the roll up summaries for that. अच्छा, roll up summary में फिर कौन कौन से functions होते हैं? Yes, can anyone tell me कि how many different operations we can achieve with the roll up summary? Some, और Count, बताइए। count. Count, mean, Minimum, max. min, max, sum. Mean Average and max. Count, yes, count. mean and max. So these are the only four functions. इसके अलावा तो फिर आपका रोल अप समरी भी हेल्पलेस है, रोल अप समरी इसके अलावा भी हेल्पलेस है, इट कैनॉट परफॉर्म एनी अदर थिंग। तो बेसिकली मैं क्या समझाने की बार बार जो द पॉइंट है, मेरा सेंटर में जो पॉइंट है घूम फिरा के वो यही है कि देर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स what we have learned so far. Some of them work before, some of them work after.
Some of them work for the insert operation, some of them work for the update operation, some of them work for the delete, some of them work for the undelete. ठीक है. And for everything, if we wanted, like if we wanted to have something, ऐसा कोई business logic जहाँ delete undelete के ऊपर जाना है, तो we only have roll up summary. Other than roll up summary, delete undelete वाला किसी में option आता ही नहीं है. If we want to have something before, then we only have validation rule. और अगर आपको, आप by the way अगर आपको triggers नहीं पता हो, तो before insert before update के लिए आप validation rule लिखोगे. आफ्टर इंसर्ट आफ्टर अपडेट के लिए आप फॉर्मूला फील्ड भी बनाओगे उसी के अंदर, और डिलीट एंड डिलीट को मैनेज करने के लिए रोल अप समरी भी बनाओगे. मतलब कहने का मतलब क्या, यू कैन डेफिनेटली रिप्लेस ट्रिगर, बट ट्रिगर का रिप्लेसमेंट इज लाइक 3 to 5 things. 3 to 5 things needs to be done. Probably we require to write down validation for that. We also require to write down formula. We also require to create roll up summary, or probably process builder also. तो हो सकता है कि अगर मैं एक ट्रिगर को रिप्लेस करने जाऊं, तो मेरे को यहाँ पे 3 से 4 चीजें बनानी पड़ती है, लेकिन इन 3 से 4 चीजों का इकलौता रिप्लेसमेंट क्या है, ट्रिगर का. तो ट्रिगर इज दैट मच पावरफुल. एंड ट्रिगर जो है ना, बाय यूजिंग ट्रिगर हम कौन कौन से डीएमएल ऑपरेशन पे लगा सकते हैं, इंसर्ट आफ्टर बिफोर, अपडेट आफ्टर बिफोर, डिलीट अनडिलीट, अपसर्ट मर्ज, सारे डीएमएल ऑपरेशन पे आपका ट्रिगर जो है वो फायर हो सकता है, सारे डीएमएल ऑपरेशन पे. तो ट्रिगर इज दैट मच ऑफ द पावरफुल काइंड ऑफ थिंग. ठीक है. आइए. सो ट्रिगर शुड ऑलवेज असाइन, ऑलवेज एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट. ट्रिगर जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट पे क्रिएट होता है. ठीक है. जैसे वर्कफ्लो ऑब्जेक्ट पे क्रिएट होता है, प्रोसेस बिल्डर ऑब्जेक्ट पे क्रिएट होता है. ठीक है. शेयरिंग रूल ऑब्जेक्ट पे क्रिएट होता है, असाइनमेंट रूल सिर्फ लीड और केस पे क्रिएट होता है, दो ही ऑब्जेक्ट पे. शेयरिंग रूल आप किसी पे भी लिख सकते हो, प्रोसेस बिल्डर किसी भी ऑब्जेक्ट पे बना सकते हो, वर्कफ्लोज प्रोसेस वो भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे बना सकते हो. 450 डीएक्टिवेटेड एंड 50 एक्टिवेटेड रूल दैट वी कैन क्रिएट. सेम इज प्रोसेस बिल्डर ऑल्सो. प्रोसेस बिल्डर में भी 500 रूल्स आप क्रिएट कर सकते हो, उसमें से 50 एक्टिवेटेड, 450 डीएक्टिवेटेड. ये सारी चीजें कहीं पे बनती है, बाय द वे दे आर क्रिएटेड ऑन ऑब्जेक्ट्स. वैलिडेशन रूल फील्ड्स के ऊपर, फॉर्मूला फील्ड्स के ऊपर, रोल अप समरी फील्ड्स के ऊपर. ठीक है. लेकिन फिर रोल अप समरी के लिए वही कि वैलिडेशन, अपना मास्टर डिटेल रिलेशनशिप चाहिए, और ये सब चीजें वगैरह वगैरह. तो ट्रिगर्स जो है, ट्रिगर्स दे आर ऑलवेज एसोसिएटेड ऑन ऑब्जेक्ट. ट्रिगर आर ऑलवेज क्रिएटेड ऑन दी ऑब्जेक्ट. तो क्या सिंटेक्स बनता है ट्रिगर का, ट्रिगर के लिए कीवर्ड है ट्रिगर. ट्रिगर, उसके बाद में ट्रिगर का कोई भी एक नेम. जैसे ट्रिगर मैंने बनाया, एक ट्रिगर का नाम दिया अकाउंट ट्रिगर. ठीक है, अकाउंट ट्रिगर. अभी नेमिंग कन्वेंशन के ऊपर मैं बताता हूँ, मैं एक चीज बताता हूँ. उसके बाद एक कीवर्ड आता है ऑन. ऑन के बाद आता है ऑब्जेक्ट का नाम. ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे कि ट्रिगर जिसका नाम है अकाउंट ट्रिगर, ऑन अकाउंट ऑब्जेक्ट. ऑन अकाउंट, जैसे मैं बनाता हूँ ट्रिगर कॉन्टैक्ट ट्रिगर फॉर एग्जाम्पल, तो उसका रहेगा ऑन कॉन्टैक्ट. ट्रिगर पोजीशन ट्रिगर, ऑन पोजीशन ऑब्जेक्ट, बट पोजीशन इज अ कस्टम ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी. ट्रिगर केस ट्रिगर, ऑन विच ऑब्जेक्ट, केस ऑब्जेक्ट. उसके बाद आते हैं ट्रिगर इवेंट्स. तो ट्रिगर इवेंट्स क्या है, अभी हम देखने वाले हैं, आफ्टर इंसर्ट आफ्टर अपडेट वगैरह वगैरह. अब यहाँ पे एक चीज और समझो नेमिंग कन्वेंशन के बारे में. जब भी हम ट्रिगर्स को नाम देते हैं, तो देखो नेमिंग कन्वेंशन का मैं हमेशा एक चीज आप सभी को बोलता हूँ कि यू कैन गिव एनी नेम टू एनी एंटिटी, बट ट्राई टू गिव द सिग्निफिकेंट नेम्स ऑलवेज. तो व्हाट इज द जनरल नेमिंग, जो एक एक जनरलाइज नेमिंग कन्वेंशन ट्रिगर्स के बारे में जो कहा रहता है ना, वो जनरली ऐसा रहता है कि इफ आई एम राइटिंग समथिंग ऑन द अकाउंट, इफ आई एम मेकिंग अ ट्रिगर ऑन द अकाउंट, तो मैं उसको नाम देता हूँ अकाउंट ट्रिगर. लेट मी ट्राई टू शो यू समथिंग. लेट मी ओपन माय विजुअल स्टूडियो एंड लेट मी ट्राई टू शो यू समथिंग. एक्चुअल जो नेमिंग कन्वेंशन है ना, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ. चलो अभी तो चलो, जब तक ये लोड हो रहा है छोड़ो. ट्रिगर सी, बस ये लिस्ट ही दिखानी थी और कुछ नहीं. द ट्रिगर्स व्हाट आई हैव रिटन ऑन द अकाउंट, आई हैव नेम्ड देम एज द अकाउंट ट्रिगर. ट्रिगर इफ आई हैव एन ऑब्जेक्ट कैंडिडेट, व्हिच वन इज दिस, ये कौन सा यू है. ठीक है. तो I have created an object candidate for my purpose. The trigger what is working on the candidate is candidate, case trigger, contact trigger, ठीक है, lead trigger, hiring manager trigger, matching trigger. These are my object names. ठीक है. तो usually the naming convention for triggers is like, the first name always is like the name of the object, and then the trigger, dot trigger like this. So unit object is, there's an object unit. The trigger what I created on this, the name is unit trigger. ठीक है. Then prevent contact deletions and everything. So I just wanted you to understand the naming convention. That's the reason I have opened this. Let me close it because it's going to take much and much memory of VS Code. Yeah. तो एक नेमिंग कन्वेंशन यूजुअली क्या होता है कि आप वैसे तो कोई भी नाम दे सकते हो, बट ना ट्राई टू गिव दिस, ट्राई टू फॉलो दिस नेमिंग कन्वेंशन. फर्स्ट नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड नेम ऑफ ट्रिगर.
ठीक है, अब हम आते हैं ट्रिगर इवेंट्स के ऊपर। ये जो यहाँ पे ट्रिगर के साथ में यू नीड टू राइट डाउन द इवेंट्स आल्सो। तो इवेंट जो है इवेंट विल इंडिकेट कि व्हेन दिस ट्रिगर इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी गेट फायर। तो मैं आपसे वही कह रहा था, अभी हम जो बातें कर रहे थे कि कुछ इवेंट्स होते हैं बिफोर इंसर्ट, कुछ होते हैं बिफोर अपडेट, कुछ होते हैं आफ्टर इंसर्ट आफ्टर अपडेट, कुछ होते हैं बिफोर डिलीट, कुछ होते हैं आफ्टर डिलीट, कुछ होता है बिफोर डिलीट नहीं, बिफोर डिलीट तो नहीं, अनडिलीट तो नहीं हो सकता, आफ्टर अनडिलीट ही होता है। ठीक है, तो कुछ इवेंट्स मतलब कि व्हेन एग्जैक्टली यू वांटेड दिस ट्रिगर टू बी गेट फायर, ट्रिगर कैन फायर, मैंने कहा ना इन सब के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस होंगे। इसके लिए फॉर दिस ऑपरेशन यू हैव वैलिडेशन रूल, फॉर दिस ऑपरेशन यू हैव फार्मूला, सबके अलग अलग सॉल्यूशंस होंगे। बट इन सभी के लिए एक कॉमन सॉल्यूशन क्या है? ट्रिगर। तो ये सारे क्या है? दीज ऑल आर द इवेंट्स, बाय द वे दीज ऑल आर द इवेंट्स, है ना, दीज ऑल आर द इवेंट्स। तो अब ट्रिगर्स में इवेंट कौन कौन से होते हैं? बिफोर पे अगर मैं चलूं, बिफोर पे अगर मैं चलता हूं तो बिफोर इंसर्ट भी ट्रिगर फायर हो सकता है। आप बिफोर इंसर्टिंग समथिंग ट्रिगर फायर करेंगे, चेक करेंगे। बिफोर अपडेटिंग, अगर कोई पुराना रिकॉर्ड अपडेट कर रहा है तो ट्रिगर फायर करके कुछ वैलिडेशन रूल चेक करेंगे। तो अभी मैं बिफोर पे चल रहा हूँ, तो बिफोर में क्या क्या हो सकता है? बिफोर इंसर्ट एंड बिफोर अपडेट, एंड बिफोर डिलीटिंग समथिंग, बिफोर डिलीटिंग समथिंग ऑल्सो, बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, बिफोर डिलीट। ये हो गया बिफोर के इंसर्ट। नाउ लेट कम्स टू आफ्टर। आफ्टर में आफ्टर इंसर्ट है, आफ्टर अपडेट है, ठीक है, एंड देन आफ्टर डिलीट। आफ्टर डिलीटिंग ऑल्सो इफ यू वांटेड टू परफॉर्म समथिंग, जैसे रोल अप समरी का अगर फंक्शनैलिटी मेरे को, यू नो, रोल अप समरी की फंक्शनैलिटी अगर मेरे को इंप्लीमेंट करना है, दिस इज द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, आई आस्क यू वन थिंग। चलो आपको मैं वो ट्रिगर पे लेके जाऊंगा, हालांकि बात निकली तो पूरी करता हूँ। नाउ सी, लेट्स टेक दिस एज अ सिनेरियो कि फॉर एग्जांपल अकाउंट है, ठीक है, जैसे एक अकाउंट है ग्रैंड होटल्स एंड रिसोर्ट। इफ आई ओपन दिस अकाउंट, तो this account have how many contacts? This have two contacts associated with this, and this one two three four five opportunities, and then it have one two three four five cases. So for this, with this account grand hotels and resort, there are two contacts, there are five opportunities, and there are five cases associated with this. If I wanted this to be get displayed over here, मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसी कोई फील्ड मेरे को नजर आए, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स इसमें दिखे 2, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज जिसमें दिखे 5, नंबर ऑफ केसेस दिखे 5। तो ऐसा मतलब मैं आपसे बोलूं कि कैन यू बिल्ट अप द फंक्शनैलिटी इन सच अ वे दैट मेरे को तीन अलग अलग फील्ड्स मिल जाए, यहीं पर ही मिल जाए कि एज सून एज आई कम टू दिस द डिटेल पेज ऑफ द अकाउंट, मैं अकाउंट के डिटेल पेज पे आऊँ, तो हियर आई वांटेड टू सी थ्री फील्ड्स, here I wanted to see three fields: number of contacts associated with this account, number of opportunities associated with this account, and then number of cases associated with this account. I wanted to have this. How you will be going to develop? तो उसमें से वो जो number of opportunity वाला part है ना, number of opportunity, that can only be done with the roll up summary. That can only be done with the roll up summary. सिर्फ ये opportunity वाला part सिर्फ roll up summary से बना सकते हो count function लेके। क्योंकि ऑल दो बिटवीन अकाउंट एंड अपॉर्चुनिटी देयर इज अ लुकअप रिलेशनशिप, लेकिन हमने जाना है, हमने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है ये चीज को, कि देयर आर थ्री स्टैंडर्ड रिलेशनशिप, अकाउंट, कॉन्टैक्ट और अपॉर्चुनिटी केसेस के बीच में कुछ खास बातें पढ़ी हमने। वैसे तो रोल अप समरी, वैसे तो लुकअप रिलेशनशिप है, बट बिटवीन अकाउंट एंड अपॉर्चुनिटी बिहेवियर इज लाइक योर मास्टर डिटेल। क्यों? एक तो कैशकेट डिलीट होता है, आप अकाउंट डिलीट करो, अपॉर्चुनिटीज डिलीट हो जाएंगी, कॉन्टैक्ट्स भी डिलीट हो जाएंगे, कैशकेट डिलीट होता है। एंड सेकंड, अकाउंट एंड अपॉर्चुनिटी एक ऐसा इकलौता रिलेशनशिप है जहां पर आप रोल अप समरी क्रिएट कर सकते हो। चलो ठीक है, तो इफ आई एम टेलिंग यू, इफ आई एम आस्किंग यू कि ठीक है मेरे को ना ऐसे तीन फील्ड यहाँ पे क्रिएट करके दो, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स एसोसिएटेड विद दिस अकाउंट, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज एसोसिएटेड विद दिस अकाउंट, नंबर ऑफ केसेस एसोसिएटेड विद दिस अकाउंट। तो जैसे इसका आंसर आना चाहिए कि हाउ मेनी कॉन्टैक्ट, टू कॉन्टैक्ट एसोसिएटेड है, हाउ मेनी अपॉर्चुनिटीज विद दिस ग्रैंड होटल के साथ पांच अपॉर्चुनिटी है, केस कितनी है, पांच केसेस एसोसिएटेड है। तो इसमें से सिर्फ जो अपॉर्चुनिटी वाला जो पार्ट है ना, अपॉर्चुनिटी वाला वही इकलौता आप रोल अप समरी से कर सकते हो। ठीक है, रोल अप समरी से। बाकी कैसे करोगे? बाकी कैसे करोगे? देन वी नीड टू, यहाँ पर आप रोल अप समरी नहीं लगा सकते क्योंकि लुकअप रिलेशनशिप है। तो दिस वी नीड टू इम्प्लीमेंट इट विद द ट्रिगर्स, दिस वी नीड टू। और मशीन टेस्ट में ये वाले ट्रिगर ही पूछे जाते हैं ज्यादातर। दो चार ही क्वेश्चन है मशीन टेस्ट में जो मैं मतलब कैसे मैंडेटरी करना फील्ड को, रोल अप समरी की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना। तो दिस वी आर गोइंग टू सी। तो कैसा है, इवेंट्स समझो, इवेंट्स कितने हैं बिफोर और आफ्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर कल चल के तुमसे इंटरव्यू में भी पूछे कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स आते हैं, ट्रिगर से कितने टाइप है, तो आप बोलोगे मेजरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रिगर, बिफोर एंड आफ्टर ट्रिगर। प्लीज राइट डाउन दिस, लेट मी सी वेदर आई हैव रिटन दिस और नॉट।
Do I have this question? Admin, 1 second, guys. 1 second. I'm coming back. I was just checking with this question कि the types of triggers पूछते हैं. Let me just try to see whether I have written this or not. What are the different types of triggers? And then triggers best practices. ये तो सबसे आखिरी में पढ़ेंगे आप, और ये सबसे शुरुआत का क्वेश्चन है कि what are the different types of trigger. तो मेजरली आपको कैसा करना है आंसर इसका कि there are two types of triggers, before trigger, after trigger. तो बिफोर ट्रिगर्स कौन से ट्रिगर होते हैं? बिफोर में अगेन देयर आर 3 कैटेगरीज, 3 to 4 कैटेगरीज, लाइक बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट एंड बिफोर डिलीट. These are the 3 categories. These are the 3 further classification of before trigger. After में क्या क्या आता है कि after insert, after update and after delete, and even after undelete also. Before undelete there is nothing. Before delete हो सकता है, before undelete नहीं हो सकता. तो before के लिए 3 events हैं, बिफोर के 3 ट्रिगर्स हैं. मेजरली देयर आर 2 कैटेगरीज, बिफोर ट्रिगर एंड आफ्टर ट्रिगर. आप चाहें तो एक ट्री स्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हैं कि अगर मैं ट्रिगर्स को क्लासीफाई करने जाऊं तो ट्रिगर्स की ना 2 मेजर कैटेगरीज बनती है, बिफोर ट्रिगर एंड आफ्टर ट्रिगर. उसमें आते हैं फिर आपके, जैसे यहाँ पे तीन तरह के ट्रिगर्स बनेंगे बाय द वे. इसमें आएगा बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट एंड बिफोर डिलीट. लेकिन यहाँ पे 4 कैटेगरीज आती हैं, 4 टाइप के ट्रिगर्स आते हैं. इसमें आता है ऑफकोर्स आपका बिफोर इंसर्ट, सॉरी आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर डिलीट एंड आफ्टर अनडिलीट ऑल्सो, यूएनडी, आफ्टर अनडिलीट ऑल्सो. तो ये एक ट्री स्ट्रक्चर आप सभी लोग अपने पास बना लीजिए. ठीक है, ये एक अच्छे से तरीके से बना लीजिए इसको, और अपने पास जो है चीजें सब चिपका के रखो सामने में. ये होते हैं ट्रिगर्स के इवेंट. ठीक है, आफ्टर अनडिलीट. अब फॉर्मेट वगैरह एग्जैक्टली अपन सब पढ़ने वाले हैं. एक चीज़ मुझे और थोड़ा सा आज ले लेता हूँ, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि कल से फिर मैं ट्रिगर्स के प्रोग्रामिंग स्टार्ट करूँ. इसके बाद आता है ट्रिगर्स के कंटेक्स्ट वेरिएबल्स. ठीक है, कंटेक्स्ट वेरिएबल्स मतलब होता है कि ट्रिगर की करंट स्टेट क्या है, ट्रिगर कब अप्लाई कर रहे हैं हम एग्जैक्टली, वो जानने के लिए कंटेक्स्ट वेरिएबल होता है. अच्छा, ये थियोरेटिकली समझाना थोड़ा सा मुश्किल जाता है इस चीज़ को, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ. लेकिन ये चीज़ ना प्रैक्टिकली बड़ी इजीली समझ में आएगी. हो सकता है आपको थोड़ा तकलीफ महसूस हो सकती है अभी, मैं इन द बिगनिंग आई एम टेलिंग यू दिस. लेकिन इससे आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखिए कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो थियोरेटिकली बहुत अच्छे से बताए जा सकते हैं, प्रैक्टिकली भी ऑफ कोर्स. लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती है कि प्रोग्रामिंग में भी तुम नोटिस करोगे कई जगह मूवमेंट पे मैंने आपसे कहा कि ये काम करते हैं, इस चीज को मैं आपको प्रैक्टिकली प्रोग्राम में समझाता हूँ, और फिर वहां मुझे उसको समझाना ज्यादा आसान जाता है. स्पेशली जैसे हमने जब बैच प्रोग्रामिंग करी तो बैच प्रोग्रामिंग में भी काफी सारे ऐसे कंसेप्ट थे, जैसे स्टार्ट मेथड कैसे लिखना, और एग्जीक्यूट मेथड कैसे लिखना, या पूरी बैच क्लासेस कैसी लिखना. तो वो कहीं ना कहीं थ्योरी पे समझने से ज्यादा आसान हमको गया प्रैक्टिकल. पहली बार जब हमने लिखा आपको काफी तकलीफ महसूस हुई होगी प्रॉबेबली, बट सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम एंड द नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू हैव रिटन दिस, तो वो वहां से ग्रेजुअली थोड़ा सा ना अपने को अपने ग्रिप में आता है. तो इन द सेम वे कंटेक्स्ट वेरिएबल समझना थोड़ा सा मुश्किल महसूस हो सकता है प्रॉबेबली अभी इस वक्त, लेकिन आप बिल्कुल घबराओ मत. आप लोग बिल्कुल भी इस चीज की चिंता मत करो कि एज सून एज यू विल बी स्टार्ट राइटिंग द ट्रिगर्स, कंटेक्स्ट वेरिएबल बहुत इजी और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा. तो ट्रिगर कंटेक्स्ट वेरिएबल के इस मूवमेंट पे ना आप सिर्फ नाम देख लो. 10 है, 10 यूज नहीं होने हैं कभी भी. देर आर 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेक्स्ट वेरिएबल, बट ये सारे यूज नहीं होने हैं. ठीक है, इज इंसर्ट, ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, ट्रिगर डॉट इज अपडेट. ठीक है, ट्रिगर डॉट इज डिलीट, ट्रिगर डॉट इज अनडिलीट. ये समहाउ इट्स रिलेट्स टू द ऑपरेशन कि ये कौन सा ऑपरेशन है, ये कौन सा ऑपरेशन है, क्या ये ट्रिगर इंसर्ट के लिए यूज हो रहा है. Is this trigger is for the update operation? If this trigger is this trigger is for the delete operation? Is this trigger is for the undelete operation? We wanted to know what is the exact status of a trigger. To know the current, if we can identify the current status of trigger, we actually make the use of context variables. But then don't fear of it, please don't fear of this is absolutely चिल्लर सा कंसेप्ट जो अभी अगर शायद थोड़ी दिक्कत जा भी रही है ना, तो हमको कौन से एग्जाम लिखने हैं. we Nobody is going to ask you to write down the definition of context variable, how many different types of 10 variable, and this is the 14 mark question. You are not going to give any exam. You just require to understand this in practically. That will be more, that will be more fruitful for everyone. तो ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि सिर्फ क्या है.
Trigger dot is insert, trigger dot is update, trigger dot is delete, is undelete, is before, is after, is executing, is size, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है. Even the last one is what? Trigger dot new and trigger dot old will be used. ये तो use होंगे आपके, ये use होंगे आपके. There is more than that. 13. Why I have written 10? Why I have written 10? We have not 10. We have 13. We have 13 ट्रिगर कंटेक्स्ट वेरिएबल. जो मोस्टली जो यूज करूंगा मैं कौन कौन से, डीएमएल वाले सारे. ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट यूज करूंगा मैं, आप भी. ट्रिगर डॉट इज अपडेट हम लोग यूज करेंगे. ट्रिगर डॉट इज डिलीट एंड इज अनडिलीट यूज करेंगे. इज बिफोर, इज आफ्टर यूज करेंगे. इज एग्जीक्यूटिंग वी विल नॉट यूज. ट्रिगर डॉट साइज वी विल नॉट यूज, ठीक है. ट्रिगर डॉट ऑपरेशन टाइप ऑल्सो वी विल नॉट यूज, ठीक है. हाँ, ट्रिगर डॉट न्यू एंड न्यू मैप, वेयर इज दैट? ट्रिगर डॉट न्यू and new map, this we are going to use. Trigger dot old and old map, this is also we are going to use. So what I'm going to do, I will be splitting this topic, I mean in the periodical sessions, ठीक है. अभी मैं सिर्फ आपसे क्या बोल रहा हूँ, एक नाम सुन के रख लो कि यस यस दिस इज समथिंग आई हैव लर्न, या दिस इज समवेयर आई हैव लर्न. बाकी इसका एग्जैक्टली यूज क्या है, ट्रिगर डॉट न्यू कहाँ यूज करना, न्यू मैप कहाँ यूज करना, ट्रिगर डॉट ओल्ड कहाँ यूज करना, ओल्ड मैप कहाँ यूज करना, दैट एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न इट प्रैक्टिकली. तो ये वहां क्लियर करेंगे अपन, ठीक है. बस अभी इसको सुन के रख लो. बल्किफिकेशन एंड एवरीथिंग ऑल्सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू डायरेक्टली इनटू ट्रिगर्स. ट्रिगर में ही बताऊंगा. एवरी ट्रिगर वी नीड टू मेक इट बल्किफाइड, दिस इज समथिंग अ बेस्ट प्रैक्टिस. क्या होता है बल्किफिकेशन, ये मैं ट्रिगर पे वही बताऊंगा. And by tomorrow we will be starting with the first use case. First use case, what we are going to do, we are going to make some of the fields as required. जैसे आज हमने डिस्कस किया ना कि what are the different ways you can make a field required. So the first was required checkbox. The second was page layout customization. The third was the validation rule that you have just seen. The fourth was your uh, fourth was probably the visual force or something like, and the fifth was like trigger. If altogether there are 5 ways, then we will be learning the fifth way, that how with the help of a triggers we could make some of the fields as required. How can we make some of the fields as required, that we are going to see. Okay, by tomorrow I will be starting this use case. Chalo. That's all for your today's introduction of the trigger.